Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic for today's class is required returns and the cost of capital. So dear students, आज हम देखेंगे कि how we measure and how we analyze the cost of capital. कि कारोबार करने की जो cost है overall capital की, शेयर होल्डर्स के अपने पैसे हैं, ओनर्स के अपने पैसे हैं या बैंक से कोई लोन लिया है, तो उनकी ओवरऑल क्या कॉस्ट में पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. If you see the slide and you see the definition, cost of capital is the required rate of return on the various types of financing. यानी कि different तरह की जो financing होगी उन सब का जब average लेंगे तो that would be called weighted average cost of capital. उसे हम कहते हैं cost of capital. मतलब जहाँ जहाँ से भी financing हुई है business में उन सबको मिला के जो cost बनेगी that is cost of capital. For example, you can see on the slides we have three different options in the portfolio of financing. Long-term financing. You can see कि long-term debt 35 million का long-term debt है, loan है, or it can be the bonds or it can be loan from some bank. Preferred stock, preferred shares हैं 15 million के, और इसी तरह common stocks या shareholders हैं that is 50 million dollars. The total जो financing का size है that is 100 million. Or if you see the weightage, the 50% of the financing is from common shareholders, that is common stock equity, 35% from the long term debt लोन की फॉर्म में है, और 15% is from preferred stock. तो ये उसका वेट है, मतलब 50 आधा जो है वो इक्विटी से आया हुआ है और 35% लॉन्ग टर्म डेट से आया हुआ है. दिस इज द वेट, दिस इज द यू कैन से प्रोपोर्शन इन द फाइनेंसिंग. नाउ we will focus on the cost of debt. फर्स्ट देखें cost of debt में cost of debt is the required rate of return on investment of the lenders of a company. Lenders of a company means it can be a bank, it can be bond holders. जिस किसी ने भी कंपनी को कर्जा दिया है, लोन दिया है, उसकी कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ रही है. If you see the equation in the yellow color, KI is equal to KD into 1 minus capital T. यहाँ पे जो T है, capital T, this is the tax rate. The tax rate in the, you can say any country, the tax rate on the income of a company. और KD वो रेट है जो आपका बैंक के साथ डिसाइड हुआ है. फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड द रेट डिसाइडेड इज अराउंड 15%. तो वो KD 15% हो जाएगा, लेकिन उसके टैक्स का क्या इम्पैक्ट उस पर आएगा, वी नीड टू कैलकुलेट दैट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, $1000 par वैल्यू बॉन्ड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, और अभी वो ट्रेड हो रहे हैं $385 के, और 10 years to maturity है. So if you calculate it in this way, you put the values. 385 is the, you can say, price of a bond, 1000 is the face value, और KD जो है that is, we will calculate KD. तो KD इसमें हमारे पास जो आया है that is 10%. If you see, KD is 10%. On the previous data we have calculated KD. 1000 face value है बॉन्ड की, यू कैन मैच्योरिटी वैल्यू भी इसे बोल सकते हैं, और अभी जो मार्केट में प्राइस है वो है $385. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो केडी हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%. अब 10% जो है ना वो है जो वी आर पेइंग टू द बॉन्ड होल्डर्स. लेकिन इसमें टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो भी नहीं आया. टैक्स के इम्पैक्ट को देखने के लिए वी विल यूज 40%. एज यू कैन सी इन द इक्वेशन, इस 10% इंटू 1 माइनस 0.40%, 40% जो कि टैक्स है, तो फाइनल आ जाएगा 6%. इसका मतलब ये है कि वैसे तो कंपनी बैंक को पे कर रही है 10% ये बॉन्ड होल्डर को, लेकिन अगर टैक्स का इम्पैक्ट हम देखें, उसकी वजह से जो एडवांटेज मिल रहा है उसके बाद जो हमें एक्चुअल कॉस्ट पड़ रहा है दैट इज 6%. अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये है कि इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस. whenever company has to pay interest, तो tax authorities allow interest to be deducted before paying tax. टैक्स पे करने से पहले ही आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को माइनस कर लें, उसके बाद इनकम कम हो जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स पे करें. दिस इज एन एडवांटेज फॉर, यू कैन से, डेट और लोन. जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर डिविडेंड की बात करें तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज, स्पेशली टैक्सेशन अथॉरिटीज, दे डू नॉट अलाउ टू डिडक्ट डिविडेंड फ्रॉम द इनकम. वो कहते हैं डिविडेंड आपने माइनस ही करना, पहले टैक्स पे करें, उसके बाद जो चीजें आएंगी उसके ऊपर डिविडेंड पे करना है.
तो लेकिन जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, जबकि डिविडेंड जो है दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, बल्कि वहां पर तो डबल टैक्सेशन हो जाती है। तो फिर हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास फाइनल कॉस्ट ऑफ डेट आ गया है 6%, वैसे 10 था, टैक्स का हमने इम्पैक्ट उसमें जब शामिल किया, नाउ दिस इज फाइनल 6%, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। Cost of preferred stock में the dividend is fixed and it is same across the years, तो इसका simple formula dividend over price। If you guys see on the screen, the question here is there is preferred stock, उसकी par value 100 है, dividend per share $6.30, current market value 70 है, तो 6.30 divided by price 9%, तो 9% is the cost of preferred stock in this case, in this question। Cost of debt हमारा 6% आ गया था, cost of preferred stock is now 9%। And the third one, cost of equity, most important. So to calculate cost of equity, there are different approaches. For example, one is dividend discount model, capital asset pricing model that we call CAPM, or before tax cost plus risk premium। Cost of equity capital के लिए you can see we calculate the cost of equity by this formula। इसको अगर हम और simple करें, so this is the formula for constant growth model के लिए K is the cost of equity, D1 is the next expected dividend, D1 is जो आने वाले वक्त में हमें dividend मिलने वाला है, that is D1। इसी तरह से P is the price, you can also say the value of a company of a stock share, और V भी लिखा जाता है and sometimes we write it P not P, or small g is the growth rate in dividend, not in share price, this is the growth rate in dividend। So you can see and you should learn this formula, d1 over p naught plus g, this is used to calculate cost of equity when we have constant growth in dividend। For example, there is a question on the screen, you can see a common stock outstanding with a current market value of 64.80, तो 64.80 हमारे पास क्या है, that is the price of a share, price of a stock। Current dividend at 3, so 3 is not the D1, remember this is not the D1, this is D0, we have to grow it by 8%। so you can see on the screen $3 के बाद उसको हम 1.08 से multiply भी कर रहे हैं to calculate D1। D1 वो होता है जो आने वाले वक्त में फ्यूचर में हमें डिविडेंड मिलने वाला है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज D1। बहुत सारे स्टूडेंट्स समटाइम्स कंफ्यूज D0 विद D1, D1 हमेशा इट वुड बी इन द फ्यूचर, और नेक्स्ट इमीडिएट एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है उसे हम D1 कहते हैं। तो इफ वी पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो वी विल गेट द आंसर हियर इज 13%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास आ गया 13%। now we have calculated cost of debt भी हो गया, cost of preferred stock भी हो गया, and now we have also calculated cost of equity, that is 13%। this is growth phases model कि अगर different growth phases हैं, let's suppose 5% for the 2 years, 7% for the next 3 years, और उसके बाद 11% constant है for example, उसके लिए the formula is on the screen, we can use this formula and we can calculate the growth phases। ग्रोथ फेजेस की डिटेल में इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, to calculate cost of equity we also sometimes use CAPM, capital asset pricing model, और इसका फॉर्मूला है RJ is equal to RF। RF यहाँ पे है रिस्क फ्री रेट, that is the rate that you can earn on investment without taking any risk, zero risk के साथ। For example, T-bills, Treasury securities, or we can say that is also close to national saving schemes, जैसे in Pakistan we have कौमी बचत स्कीमें, उस तरह के जो रेट हैं that is called risk free rate, that is close to risk free rate। और सेंट्रल बैंक की वेबसाइट से भी T-bills के रेट्स मिल जाते हैं, that is also called risk free rate। RM is the return on the market, return on market portfolio,
that is sometimes given in the question, so you can take that as a market rate. Sometimes return on any stock market, Standard and Poor's or PSE hundreds, PSX, तो वो वाला जो return given होगा, that is also called as market return. इसी तरह से एक इसके साथ मल्टीप्लाई फिर हम कहते हैं करते हैं बीटा को. बीटा इज द, यू कैन से, risk of that company. Beta is generally, it is close to 1, it is can be less than 1, 0.4, 5, 0.8, it can be 1.3, 1.7. so that is like, you can say 0 to 2 की bracket में we have beta. Beta is the measurement of the risk, or you can say sensitivity of a company to respond to market changes. कि मार्केट में अगर ओवरऑल चेंज आई है तो आपकी कंपनी किस तरह से बिहेव करती है, हाउ मच रिएक्शन योर कंपनी गिव टू दैट, you can say, the incident in the market. On the screen we have a question basket wonders, or here beta is company है 1.25. the beta here is 1.25. by using CAPM, capital asset pricing model, we can also measure cost of equity. The other option to measure cost of equity is simply कि जी cost of debt कितना है, और जो हम एक रिस्क ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, तो उसका एक कितना प्रीमियम होना चाहिए उसमें ऐड कर दें, तो दैट इन दिस वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज द थर्ड मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कि जी कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, लेट्स सपोज 10% है, तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एक रिस्क है, तो उस रिस्क प्रीमियम जो हम चार्ज करेंगे उसको ऐड करेंगे, सो दैट वुड बी आल्सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फॉर एग्जांपल 10% केडी है तो 2.75 इज द रिस्क प्रीमियम, दोनों को ऐड करेंगे तो वी हैव केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.75%. दिस इज द सिंपल एडिशन ऑफ रिस्क प्रीमियम. अब तीनों तरीकों से हमने देखा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कैपएम, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम. स्लाइड डिफरेंस है 13%, 13.25, 13.7 में, लेकिन ऑल आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. वी आर स्टडीइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें तीन चीजें आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात हो रही है. अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे, वेटेड एवरेज, वेटेड में वेटेड का मतलब है कि कितना वेट है, कितना प्रोपोर्शन है. एज वी हैव सीन इन द स्टार्ट ऑफ द स्लाइड्स कि जी जो लोन है, जो डेट है, दैट इज 35% ऑफ ओवरऑल फाइनेंसिंग इन दैट. तो इसीलिए वी हैव यूज्ड 0.35. 35% का जो प्रोपोर्शन है वो लोन से है, और उसका जो हमें फाइनल कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रहा था टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद, दैट वाज 6%. तो इसलिए 0.35 मल्टीप्लाई बाय 6%. उसके बाद आ रहा है प्रेफर्ड स्टॉक. 15% ऑफ द फाइनेंसिंग वाज फ्रॉम प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, तो 15% मींस 0.15. और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास आ रहा था 9%, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9%. और लास्ट में 0.50. इट मींस कि 50% ऑफ द फाइनेंसिंग फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओनर्स, इन ओनर्स के शेयर होल्डर्स के ओवरऑल फाइनेंसिंग में 50% शेयर है, तो 50% इज फ्रॉम इक्विटी, इसीलिए वी हैव यूज 0.50. और 13% वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो भी हमने मेजर की थी. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% है, कॉस्ट ऑफ डेट 6% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 9% है. वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन हमें एक एवरेज चाहिए. बाय using this formula on the screen and by putting the values, we have finally got the weighted average cost of capital, that is 9.95%. 9.95%. if you can see on the screen, that is 9.95%. that is weighted average cost of capital. So it was the complete, you can say, explanation about the topic weighted average cost of capital. The overall cost of capital may we have 3 portions here: cost of debt, cost of preferred stock and cost of equity. इन दोनों को ऐड करेंगे, इनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड as weighted average cost of capital. In the next lecture we will also solve some exercises or questions about this topic. Thank you.